To begin with, I'd just like to brief you about the Indian Chamber of Commerce North Bengal chapter. This is one of the most vibrant chambers that we have in North Bengal. We are a group of about 40 plus members representing various businesses, industries, and professions. So we have been working for the interest of all our members, industry, and also the entire North Bengal, and representing to the various authorities, the central government and state government on a regular basis. We're not just confined to the business interest, we're also working very closely towards a social cause and taking it forward. We recently started a free COVID care center, which is 100% free community-based isolation center in Siliguri. It's a 20-bed facility providing free facilities, a mini hospital kind of a setup, which is providing free facilities for all. We're taking things forward. We have been regularly organizing seminars and webinars for the people at large. And we thought, why not have a webinar on real estate industry? Real estate industry is one of the most important industry which contributes hugely towards the GDP of this particular region. So we thought, what would be the best thing to discuss on the real estate industry in this current moment? So we thought, why not talk about the emerging trends, innovation, and how to scale up? Then what came to our mind was to whom should we get into the panel so that we really get some takeaways from this session that we have this evening. The one name that came to our mind was about a developer group, a business house, which is one of the biggest in the Eastern India and was one of the most trustworthy brands in Eastern India in the real estate sector. The name was obviously PS Group. So we thought we tried to take time from them, and we are fortunate that they gave us some time for this Saturday evening where we could get them along. And I'm very sure that this evening we are going to have a very, very healthy discussion on the real estate industry. So I welcome Mr. Pradip Chopra ji, who is the chairman and managing director of the PS Group. I welcome Mr. Arun Sancheti ji, who is the director of PS Group. I also, Gaurav will be joining after some time. So Mr. Gaurav Duggar, one of the directors of PS Group, will be joining in after some time. I welcome all the dignitaries, all the participants for this particular event this evening, and also all the members of the Indian Chamber of Commerce. To take it forward, I would like to hand over the proceedings to Mr. Umang Mittal, who is a member of Indian Chamber of Commerce and also the chair of the real estate vertical. So over to you, Umang, and best wishes to everyone. Thank you, Bea. Thank you for the wonderful introduction. And a very warm welcome to our esteemed panelists from PS Group and fellow members from ICC, all our guests today who have joined us. Well, I can safely assume that most of us from Siliguri visit Kolkata frequently. And the moment you land at Kolkata airport and head towards the city, you realize that there is one brand which catches the eye like no other, and that is PS Group. And every few kilometers, you see either some PS project or their billboards. And I think this group is rewriting definition of scale, speed, and stability. And it is a privilege to host them for today's session. So let me first start by introducing Mr. Pradip Chopra. He is the chairman and MD of PS Group. Mr. Chopra did his graduation in chemistry from St. Xavier's College, Kolkata in 1973. He's a flag bearer of the group with an uncanny ability to inspire and empower. He's a former governing board member, CREDAI, and has been actively involved with a lot of social as well as industry associations. He's a founder of Educational Institute iLead, which is among the finest in the nation. And I believe that's his baby, iLead. He's also a guest faculty at reputed management institute across the nation. He has also authored several books on real estate, self-development, and relationships. And he also writes for the national dailies from the Times of India to the Hindu. It's a pleasure to have you with us today, Pradip ji. Thank you. We also have with us Mr. Arun Sancheti, who's a director of PS Group. With 22 years of stint in real estate with the group, he is no less than a veteran in the field. From construction, clearance of projects, quality and safety, to government endorsed projects, he is the backbone behind all. A graduate with BCom from Bhawanipur College, Kolkata, he is very religious at heart and tries aiding to people in need, which reflects his humble and amiable nature. Music keeps him going. Very enthusiastic about cricket and badminton, he is passionate about traveling and connecting with positive people
and strives to take the group to the zenith of success without compromising on the values of honesty, dignity, and commitment. A very warm welcome, Arunji. Thank you. Thank you very much. I'll also introduce Gauravji, who will be joining us shortly. Gaurav is an alumni of London School of Economics and SP Jain Institute, Mumbai. He is currently modernizing, restructuring, and spearheading the group's planning, purchase, and contracts budgeting. He is keenly involved with the design and development of all projects. He heads the labor welfare program for the organizational workforce. He also oversees the sales strategy and marketing for the spectrum of projects. So before we start off with today's session, I would like to request all members and guests who have joined us today, if they have any questions for our panel, please write them at the chat box and we shall try and take up as many questions as possible towards the end of the session. Thank you. So I would like to start today's session with Pradip ji. So Pradip ji, so much is talked about a group's success once it reaches a certain stage of growth. But we want to understand today's conversation. We want to start today's conversation with you by understanding where it all really began. We want to know about your journey and what was a turning point for the PS group. To tell you honestly, I had lost everything in my previous business, which was before real estate. I was selling televisions. So the whole idea was that get into a business where my competitor will be as novice as I am. He has no advantage. We'll have a level playing field. So I got into TV marketing when TV had come to Kolkata, and somehow the JK TV factory closed down, and a lot of money was siphoned from our company because I was not looking after the thing. So virtually there was no money. And to tell you honestly, the reason why I got into real estate, because I realized the real estate is the only business where you can make big money without having a copper in your pocket. And the inspiration came from Amitabh Bachchan in Trishul. So if you remember the dialogue, he said, Mr. R.K. Gupta, आपसे मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ, पर मेरे जेब में 5 फूटी कौड़ियाँ भी नहीं है, लेकिन आपको मैं बोल दूं कि अगर ये जमीन आप मेरे को दे देते हैं तो आपके 5 लाख आपको 15 दिन में मिल जाएंगे. और उसने किया. तो मैं भी देखिए ऐसा है ना कि कई बार नोविस होना एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है. हम लोग कहते हैं कि बम्बल भी जो है ना, उसका जो फिजिकल साइज है और उसकी पंखों की जो साइज है, तो एज पर द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स इट कांट फ्लाई. बट बम्बल भी को ये बात मालूम नहीं है, एरोडायनेमिक्स का लॉ पता नहीं है, तो वो शी गोज एंड फ्लाई. तो हमको पता नहीं था हम किस चीज में घुस रहे हैं, लेकिन हमारी इग्नोरेंस वाज ब्लिस. एंड वो दरवाजे खुलते गए. नहीं तो आप सोचिए, जिस आदमी के पास 100 रुपए नहीं हो, वो जाके 12 लाख की डील करता है और उसके बाद उसको 21 लाख में बेचता है. उसके बाद फिर 5 लाख रुपया. मेरे पास तो कुछ पैसे थे नहीं. मैंने सुरेंद्र बाबू से पार्टनरशिप की जब, तो हम लोग दोनों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन भगवान की अनुकंपा थी. वो नेगेटिव कैपिटल में हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट हो गया. आपको ब्याज देना नहीं पड़ा, हमने ब्याज अर्न किया. तो वो एक यूनिक चीज थी उस टाइम. तो इस तरह हम लोग रियल एस्टेट में बेसिकली हम इसलिए आए कि हमको लगता था कि और कोई बिजनेस में हम जहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए वहाँ तो हमारे पास है नहीं पैसे लगाने के, और छोटा काम हमको करना नहीं था. तो दैट एक्चुअली brought us to real estate, and we understood because not having money is also a big advantage. जब आपके पास पैसे ही नहीं तो आपका दिमाग चलेगा कि अब बिना पैसे काम कैसे करना. तो सारे प्रोजेक्ट उसके बाद हम लोगों ने चेष्टा ये की कि हमारे पैसे लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं, जॉइंट वेंचर करो लैंडलॉर्ड के साथ और कंप्लीट करो. उसको जो प्रॉमिस किया उससे बेटर डिलीवर करो, कस्टमर को भी बेटर डिलीवर करो. तो ये एक फिलॉसफी, बिकॉज आप यू आर ऑलवेज ऑन द टोज, बिकॉज यू नो दैट यू कैन गेट आउट. आपके पास और कुछ सपोर्ट सिस्टम है नहीं. आपके पास सपोर्ट सिस्टम आपकी ऑनेस्टी और डिलीवरी और यही है आपके पास. तो आपके पास तो आपके पास नो अदर ऑप्शन. सो दैट वाज एक्टेड एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एंड खुलते गए रास्ते और बढ़ते गए हम लोग आगे. तो ये दिस इज हाउ वी स्टार्टेड ऑनेस्टली.
ये इसलिए ऐसे स्टार्ट किया। But sir, there, so what was the turning point? आपका जैसा आपने बोला कि खुलते गए रास्ते, एक कहीं पे आपको ऐसा लगा, एक मौका मिला होगा सर? टर्निंग पॉइंट तो पहली ही डील ही थी। पहली डील आप सोचिए, मेरे पास 100 रुपए नहीं थे और मैंने लॉर्ड सिन्हा से एक जमीन का सौदा किया 12 लाख रुपए में। 12 लाख रुपए मुझे पता था कि अनिंदो कुमार बैरन सिन्हा ब्रिटिश नागरिक है, तो उनको बिना एक्सचेंज कंट्रोल से परमिशन मिले बिना वो इन कैश कर नहीं सकते चेक। मुझे मालूम था कि ये चेक 3 महीने तो इन कैश होगा नहीं, तो 3 महीने में मेरे को एक दूसरा ग्राहक खोज के बेचना है। तो वो मैं डील में मैंने उस समय 8 लाख रुपए कमाए बिना एक पैसे लगाए। और आप सोचिए 19 अर्ली 80s की बात है, उस टाइम 8 लाख रुपए वाज लॉट ऑफ मनी। एंड द अदर टर्निंग पॉइंट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हमने 5 लाख रुपया दिया और वो 5 लाख भी 7 दिन में हमारे पास वापस आ गया। और सुरेंद्र बाबू की एक खासियत थी कि उन्होंने वो माल बेचने में माहिर थे। और आप जिस बिजनेस में भी माल अगर बेच सके ना, मतलब आपकी सेलिंग अगर तगड़ी हो, तो आप उस बिजनेस में आप यू विल आउट परफॉर्म अदर्स। सो हमारे पास एक तो कैश फ्लो की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, और दूसरी फर्स्ट प्रोजेक्ट में आप सोचिए कि 5 लाख रुपया देके सौदा किया हमने और उस जमाने में 40 लाख रुपए कमाया। तो वो 5 लाख रुपए का सौदा करके 40 लाख रुपया कमाना, दैट ऑल्सो अर्ली 80s में, वाज लॉट ऑफ मनी। उस तरह की डील आज तक नहीं हुई हमारी दूसरी। इट वाज सच अ गुड डील। मैं जब वो डील, मतलब सुरेंद्र बाबू के जो अंकल वगैरह थे, वो इस बिजनेस में आने के पहले उन्होंने हम उनको, ही वाज नॉट श्योर, किसी को पता, उनको पता नहीं था ना कि ये बिजनेस में क्या होता है नहीं होता है। तो हम लोग को उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ एक काम करो, एक वेटरन बिल्डर है रामविलास जी, उन्होंने मंगल ज्योति और मंगल दीप 2 बिल्डिंगें बनाई है कलकत्ते में, लैंसडाउन रोड में, वो बीरा मंदिर के सामने है। बोला रामविलास जी से पूछ के आओ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग दोनों गए रामविलास जी के पास। रामविलास जी हम लोग पूछे, भाया डील क्लोज होगी को नहीं हुई? मेरे को आलती हुई को नहीं। बोले मेरे से बाद में करी, पहले जा डील क्लोज करा। बोले ई तरह डील पागल है क्या, ई तरह को डील मिला करे? बोले मेरे घर तो आया कोई दूसरा कहीं जाता तो वो तो थाने डील लेने को दे, तो वो खुद के ले ले डील। बोले जाके डील क्लोज करो, उसके बाद मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो हम लोग जाके बोले उनके अंकल को, सुरेंद्र बाबू के, कि वो तो ये बोल रहे हैं। तो बोले यार 2 दिन में डील क्लोज करो उसको। तो 2 दिन में हम लोगों ने डील क्लोज की। और उसके बाद देखिए एक क्या है, व्हेन यू गेट ग्रेट सक्सेस एट द बिगिनिंग ना, यू गेट अ बिग बूस्ट। इट इज अ मॉरल बूस्टर। इट आल्सो गिव्स यू, बिकॉज यू हैड कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड दैट यू रियली डोंट नो। तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि तुम बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो ये, तुम तो, कोई मेरे को बोला तुम तो हथेली पर सरसों उगाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कहा यार चेष्टा करने से हथेली पर सरसों उग जाती। तो यही थी, मतलब the turning point I would say was the first 2 deals in its own way. जैसे मिस्टर मित्तल को, एलन मित्तल को किसी ने पूछा कि what was your biggest, what moment of your life you cherished the most? उन्होंने कहा when I made the first million, that was my cherishable moment, because then I told my wife we are a millionaire, so we can now travel first class and we'll have a car, a big car and all these things. But after that I've made billions, but it has never given me that kick what that first million gave me. That kick was very different. So if you remember, I think these 2 deals gave us the biggest kick. अब क्या है कि अब ठीक है यार, अब कोई इतना, those were the turning point from, you came from a background having nothing to at least have something. Yeah, so that was a big turning point. Not having money is a big advantage. So this line will always stays with us. And well, that's such an incredible and inspiring journey, and I'm sure it'll go a long way in motivating us to take chances and keep moving ahead with renewed energy and determination. लोग बोलेंगे, जो बोलना है बोलने दो, but we should keep marching ahead in life. Absolutely. That also brings us to one of our topics for today, which is scale. And typically, sir, हमने देखा है कि sir, in our part of the country, especially tier 2 and tier 3 cities, developers complete say around 10-12 medium-sized projects in a span of 10 years. And there comes a point, sir, after which people start saying, भाई कौन संभालेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, रिस्क ज्यादा हो जाएगा.
No doubt, sir, Calcutta is a much bigger market than Siliguri or Guwahati. But I believe PS has taken up a scale that is almost unmatched in East. Tell us about how you were really able to shift your orbit and embark on this scale. And how can developers from tier 2, tier 3 markets scale up given we have market size limitations? See, let me give you all a good news. And the good news is, see, there was a migration all over the world. There was a migration from rural to urban areas, small towns to big towns to metropolitan cities. This migration is not only restricted to India, it's restricted everywhere. You will find in France there are ghost villages. They are very beautiful places, but people have moved to urban areas because of better lifestyle, better healthcare, better education, better business opportunity, better jobs, and so on. But this pandemic has reversed. Now that you can work from home, people will move back to areas which are cheaper, which are more healthier, which are eco-friendly, which are beautiful, because your location doesn't make any difference. You can work from anywhere in the world. Yeah. So now what will happen is this trend may, if not stopping, will at least to some extent the speed will come down, or the tier 2 cities, tier 3 cities will become attractive destination. And आप लोग जो नॉर्थ बंगाल में हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, is the Darjeeling belt. You know, this picturesque places in the hills, which lies undeveloped. And अभी जो चाय इंडस्ट्री की मैंने जो सुना है, मेरे को पता नहीं है कि the industry, tea gardens are not doing so well, and at least part of the tea gardens can be converted into, let's say, resorts and things like that. There will be good number of people who would like to work from places which are so beautiful as the tea gardens and small places where the living cost is less, and they can work for an American company sitting in, let's say, Darjeeling. So that's as long as the connectivity is taken care of, this will happen. Secondly, what is happening is 40% of Indian population is below 18 years of age, which is 60 crore people. Now they are going to get married. They will, they'll not live with their parents. Even if they want to live near their parents, they'll have an independent flat next to their parents' house. India is going to have the biggest real estate market, or biggest real estate opportunity in the next 20 years. No other country can match this kind of opportunity, not even China, and forget US or Europe, because US, Europe, the whole population is shrinking. Everyone already has more than 2 houses. Whom will you sell a house? Yeah, because existing houses are not occupied. So there is very limited market. Only market is for people who want to just upgrade their house and okay, leave, but then that house becomes empty. India is the only country where there is acute, real need of housing, because people don't have proper housing. And these children who are below 18 are have a lot of aspirations. They have capacity to earn. They're better educated than their parents. I had gone to visit some of the tea gardens, and I found that there's a shortage of manpower in tea gardens, because the tea pluckers children don't want to become pluckers. They want to get educated. They want to become IT professionals. So therefore, what I'm trying to say is, see, last 5 years, 6 years was a little slowdown for real estate. But I am seeing that next 20 years is going to provide you a greatest opportunity of real estate, because it will be driven by real demand of the people who will afford. See, the other good thing which is happening is the interest rates are coming down globally. And since our whole economy is getting interconnected, the interest rates is already very low, and it's going to remain low, and therefore the affordability of people will increase also. So therefore, there is a big market. Now, in this kind of a dream market scenario, why to remain a small player? Because you can see, देखिए, हर चीज में risk है. There's nothing which doesn't have a risk. Yeah, but you have to see that. मैं आपको एक example देता हूँ. I just give you an example of Alan Mittal. Alan had gone to Indonesia, and he, in 18 years, he built
a good, reasonable good business in steel, which he was known to. He bought a good house and he had a big car and a club membership and all kinds of things. 6, 7 days he was lost in his own thoughts. So wife was getting worried and he said, I was driving the car and wife was sitting next to me and my 2 children are with the back seat. And then suddenly my wife asked, what's bothering you? And so he parked the car and he said, look, uh, there is a company in Mexico which I want to take over. But the problem is that we have to put everything on stake. And if this move goes wrong, we lose everything, including our house, and everything will go. But then I have sufficient knowledge and sufficient ability and sufficient connection. I'll get a job. And at least children can go to the same school and we can have a decent, maybe we'll not have this big house, but we can take a rented place and we can live. Wife, you have given me a downside. Now give me the upside also. You said upside is that if I'm able to turn around this company and make it profitable, there are 7 such big steel plants lying closed worldwide. And I'll create a credibility. Will have confidence of the bank. I'll have enough cash generated from this, and I'm very confident of turning it around. I can take one after the other. All the 7 steel plants, which are biggest in the world, will become the biggest steel maker in the world and maybe the richest man. बोले फिर सोचना क्या है? ये रिस्क, इतना रिस्क तो हम ले लेंगे, क्या ले लीजिए, take it over, and the rest is history. रिस्क तो हर जगह है, बिना रिस्क का कोई काम नहीं है. The ships are safest at the shore, but that is not the place they should be. They should be on the high sea, where there can be cyclone, there can be typhoon, there can be tsunami, all kinds of things will happen, but you have to go with there. That's your destiny. So it's high time now you think big and have big projects, because I am quite confident. See, in big projects, you have 3-4 advantages. Beside the disadvantage of, you have a bulk. You really don't have to complete the big project in one go. You can do it in phases. Yeah. And you can complete in phases as you go ahead and sell and all that. But ultimately, since it's a big project, see what happens that from the customer's point of view, your cost of maintenance goes down. Yeah, that's one big advantage. You can give a lot of facilities, which is not possible in a small project. Thirdly, your marketing costs come down. And your economy of scale also brings down to some extent the cost of construction. So therefore, it is in the interest of all stakeholders to the bigger the better. This is the thing. So, and as far as we are concerned, we have done some big projects like Sherwood State. It was a path-breaking project because that project those times brought the maximum revenue uh, from one single project. We started selling at the rate of 925 and we ended selling at 6,000 rupees while the project was still on. 6 times appreciation. It's unheard of. So that can happen because what we initially thought that यहाँ पर तो स्कूटर वाले आएंगे इसलिए वहाँ कार पार्किंग की जगह देने की जरूरत नहीं है, स्कूटर पार्किंग दे देंगे. अल्टीमेटली हम लोग को एक्स्ट्रा जो बेसमेंट का प्रोविजन नहीं था, बेसमेंट बनाना पड़ा, वो सारे गाड़ी वाले आ गए वहाँ पे और बड़ी गाड़ियों वाले आए. बिकॉज 6,000 देने वाला जो आदमी है वो तो छोटी गाड़ी में आएगा नहीं, बड़ी गाड़ी में ही आएगा. तो होल the profile changed because the whole project came up in such a attractive fashion. And now the trend is that people don't want to stay in standalone houses. They want to live in gated community where they have all kinds of facilities, and it's a trend we change where people want to have a jogging track, and people want to have a club, people want to have swimming pool, people want to have all kinds of children program. तो आपके पास जगह नहीं होगी तो आप कहाँ से देंगे? तो अब तो ट्रेंड यही है कि बड़े प्रोजेक्ट्स you can even try in tier 2, tier 3 cities. So this is what is how I see. And you see, I see that we have this demographic dividends. We have the youngest population. We have in young population, 40% population, young population. You see, they'll find ways to earn money. You see, देखिए क्या हो रहा है अभी, वर्ल्ड वाइड यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए यंग पॉपुलेशन जहां है वही तो जाएगी. अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है.
हम यहाँ पर बैठ के I can give tuition to a child in UK. Do you know that people in Calcutta, there are certain English teachers who are teaching English to British children, students from Calcutta, teaching them their own language. This is, I mean, it's mind-boggling things will happen because of this new adoption of working from home. आप सोचिए पैंडेमिक के पहले कितने लोग हैं वर्क फ्रॉम होम में, तो all top companies said that you can work from home for rest of your life. So these people will decide, okay, we'll become a permanent traveler. Why should I stay at home? Yeah, I'll keep on traveling and I'll work from wherever I am. Or some people will decide, अभी already आप देखेंगे YouTube videos में बहुत सारी ऐसी videos हैं. People say, I am working from Kalimpong and I am working from Bhutan and I'm working from hills. Look at the place, it's so beautiful, and I'm starting my work now and I'll stay here. So all these places which earlier we thought are, you can't attract working population. This can never be a workplace. It will always remain a holiday place. Now those concepts are changing. So these are the trends. And innovation, जो आपका है, I think innovations will happen, in every field of real estate operations. Today only I had a workshop of blockchain, where I can tell you the blockchain is applicable everywhere. Even in real estate construction, you will have just-in-time items coming in because there's no human error. It is the machine which will decide when you will require how many nails, and you will receive the nail exactly when you require that nail at your site. So therefore, you don't have overstock of inventory, or you are not under stock of inventory. You will have just, and since the machine is calculating every minute, whatever you're doing, it is calculating and factoring it, it can't go wrong. So blockchain is going to be so cheap and so affordable that every operations will be guided by blockchain, supply chain management. And many other aspects of real estate will have the technology driven operations will happen. And so all of us should bring that culture of learning organization. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि now the organization should become learning organization, and the education institution should start thinking commercial terms. In fact, getting the student involved in activities which can be monetized, so the students know exactly, so that they don't pay any fees, but the college pays them something to come and work. So the college are not hiring students, they are actually hiring interns. So that model is going to happen sooner or later. And of course, the organization has to become learning organization. Because if you're not learning organization, if you're beaten by your competitors because they are adopting technology faster than you, then you will have a tough time. These words could not have been more encouraging, sir. And thanks for giving such a large perspective on the industry. And so now we move on to our next question. And I would like this to Arunji. So one area in which PS Group has stood out is on-time delivery. In fact, in certain cases, before-time delivery. And all of us are aware about the web of red tapeism, overarching unclear regulation, labor material supply constraints, bad weather, festivals, contractor issues. These are all real challenges. So we would like to know, how do you manage your deliveries, and all of this while maintaining high standards of quality? Yes, there's two things that is our main motto. One is the quality and one is the commitment. Commitment to our landlord who has given us the land, whom the land we are developing the property. We given the commitment that we will complete the project at the right time. Second, we given commitment to our buyer that this is the materials we are going to use, this facility we are going to give it to you, and we give it to the right time. So all this commitment is possible because our teamwork. Our PS team is very capable to handle all the projects. Earlier, we used to make G+4 buildings. Now we are making 15 lakh, 20 lakh square feet complex. So our team is very strong. And each and every one, all the directors, all the persons, we are very concerned. We are regularly having the meetings for the time management, for the cost management,
and all this software we have. So, and every weekly meetings happening, the project is delayed by how many days, 2 days, 1 day, why the project is delayed. So deep inside we are going. That's why we are giving the timely delivery and the commitment of the materials. What we commit, we give more than that, always. हमने कमिटमेंट किया लैंडलॉर्ड को कि सर आपके फ्लैट में हमने आपको दिस क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स वी विल गिव द मार्बल की ये क्वालिटी होगी, टाइल्स की ये क्वालिटी होगी. बट जब बिल्डिंग बनती है, टाइम के साथ में हम लोग भी अपग्रेड हो जाते हैं एंड वी गिव ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स. कॉमन एरिया में हमने ये किया कि आपको लॉबी के अंदर में एसी दे रहे हैं, बट देखने को जाते हैं कि वो जो लॉबी है, वो लॉबी के साथ साथ में हम लोगों ने बिजनेस सेंटर भी दे दिया और बहुत सारी एमिनिटीज टाइम टू टाइम हम लोगों ने दे रहे हैं. जैसे अभी आफ्टर कोविड हम अपने काफी प्रोजेक्ट के अंदर में वर्क प्लेस देने लग गए हैं, जो कि 2 BHK के साथ में एक छोटा सा वर्क स्पेस बना दे रहे हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको देखते ही लोग बोलते हैं कि चलो अरे 2 BHK के साथ साथ मेरे को मेरी ऑफिस भी मिल रही है. व्हाट मोर दैट वन. तो ये एक कमिटमेंट है हमारा जो हम कर रहे हैं. Absolutely fantastic. Well, Arunji, I think that's a classic example of staying ahead of time and having an eye for detail at the same time. And there's so much of clarity. So, but I would also like to understand from you, like we have seen how the land prices are soaring and most of the developers are now looking at the JV model to grow. And I believe you have somehow pioneered the JV model in Eastern India. So, आप कैसे देखते हैं इस मॉडल को? How do you see this evolving in the days to come? And what makes JV your most preferred mode of development? प्रदीप जी इसके बारे में एकदम डिटेल में बताएंगे बिकॉज जेवी मॉडल को स्टार्ट प्रदीप जी ने किया था. Okay. तो आई रिक्वेस्ट प्रदीप जी प्लीज. See, nothing will work unless it is a win-win situation for both parties. So when you do a JV, we explain the owner of the property that आप के पास 2 ऑप्शन है. एक ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी बेच देंगे, लेकिन बेच के करेंगे क्या? हो सकता है उसका 10% रुपया आपको भी जरूरत है, 90% रुपया तो वापस इन्वेस्ट करेंगे आप. वो 90% रुपया का इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन अगेन प्रॉपर्टी है. जैसे एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी खरीदते हैं, आपके 10% से 12% से 15% इरोजन हो जाता है वैल्यू. आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आपने एक्सचेंज किया, आपकी प्रॉपर्टी 100 से 85 करोड़ रुपया. दूसरा ऑप्शन है जेवी का. आपकी अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हम अगर 50-50 आपके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे तो 100 करोड़ रुपया हम लगाएंगे कंस्ट्रक्शन, और 200 करोड़ रुपया लगा के जो काम शुरू होता है, कम से कम 300 करोड़ में तो बिकेगा, हो सकता है ज्यादा में बिके. तो 300 करोड़ का आपको आधा मिलेगा, तो आपके 150 करोड़ रुपया हो जाएगा. तो आपको 85 करना है कि आपको 150 करना है, ये आप अपना तय कर दीजिए. उसके बाद मेरे ख्याल में शायद ही कोई लैंडलॉर्ड है जो बोलेगा कि मेरे को बेचना है, मेरे को जेवी नहीं करना, तो वो जेवी में आ जाता है. हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं. मैंने 5 करोड़ रुपया दे के 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पोते कर ली मैंने. अब 100 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर मैंने कुछ भी समझिए 200 करोड़ 100 करोड़ की लैंड है, 100 करोड़ मैंने लगाया है, वो कस्टमर से लेके लगाया है, और अगर 100 करोड़ रुपया कमाई हुई उसमें, उसका 50 करोड़ मेरे पास आया, तो मेरे तो 5 करोड़ रुपया लगा के 50 करोड़ रुपया आ गया. तो मेरे लिए तो बेस्ट है फ्रॉम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी बेस्ट है. तो इससे बढ़िया मॉडल क्या हो सकता है? लेकिन ये समझाना पड़ेगा आपको लैंडलॉर्ड, और समझाने से उनको, और ये इसमें कोई मिसगाइडिंग या कोई हेराफेरी कुछ नहीं है, तो एकदम सही गणित है. तो आप ये गणित, अब खाली उसमें एक ही चीज है कि मैं आपको ट्रस्ट कैसे करूं. तो उसको हम ये समझाते हैं. जैसे हमारा सेकंड जो जेवी हो रहा था, मैंने जेवी था नहीं एक्चुअली, हम लोगों ने लैंडलॉर्ड, हमारे पास रुपए नहीं थे, तो हमने उसमें था कि टेनेंट को आप 27 लाख रुपया दे के, टेनेंट तो चला गया, राज मेहतानी सतराम दास वाला था, लैंडलॉर्ड को 27 लाख रुपया देने थे. तो हमने पूछा उनको कि आप 27 लाख का करेंगे क्या? बोले जी मैं तो फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा. मैंने कहा आपको आएगा 7%, 6% ब्याज आएगा. हम लोग आपको अंडरटेकिंग देते हैं 12% ब्याज तो आपको मिलेगा ही, और 12 नहीं, उस टाइम हमने 15% को ऑफर किया था. 15% ब्याज तो आपको मिलेगा, और ऊपर जो मिलेगा वो आपका है. और आपको रिस्क क्या कि मैंने कहा कि आपकी तो 54 लाख, माने 54 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम में है. हमने 27 तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और जाके उसमें
50 और इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जब तक आपको आपका हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक तो आप ट्रांसफर करेंगे नहीं, तो आपकी तो फुल्ली सिक्योर्ड है। आपकी तो आपको हमको 27 लाख देने से तो आपको 54 की प्रॉपर्टी मेरे नाम में ट्रांसफर करेंगे। आपके 27 बाकी हो गए, उसके अगेंस्ट में 54 तो आज ही मैंने आपको दे रखे हैं, और बाकी आपको और लगाएंगे, तो आपका तो कोई रिस्क जीरो है। और इतने 15% मैं कमिट करता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको 27 लाख रुपए मिलने थे, उसके जगह उनको 54 लाख रुपए मिले उसमें। माने ही गॉट double the return, which is far beyond anybody's expectation too. Once you create those stories, when you create such people who are benefited because of, I mean, हमने कोई कुछ किया नहीं, वो तो मार्केट साथ दिया था. So he became such a big spokesperson for us that he went to 33 people, his friends, and his relatives. We got over a period of last 35 years, 40 years, some 33 joint ventures because he became our brand ambassador. So, see, our biggest advantage is, as you rightly said, delivery and delivering more than what you're committed. If that happens, anybody can build this kind of brand and everybody can build this kind of fan following. It's incredible. And something to understand is that we leave a lot of money on the table. And I think the focus has to be on increasing the pie for everyone. And it has to be a win-win situation for the landlord as well as a developer. And I think could not have been better put. Siliguri also, sir, is witnessing a lot of emergence on the JV model, as and there's so much to learn from you in this case. So one more question that I would like to put you is, Deepji, is and this is so relevant in today's context. We have seen a lot of partnerships, and in partnerships, conflicts are bound to happen. We have seen partnerships fizzle out over years, and in some cases, they don't even last for one project. But in your case, you have been successfully running a business since almost 4 decades, that too with 3 families involved and 2 generations. And I'm sure this must not have been easy, given everybody has ego, to be realistic, sir. Everybody have their own opinion. सब अपने experience से आते हैं. How do you manage such a diversity within your organization? See, first you have to strongly believe in a maxim that if 2 people in the organization think alike, one is useless. So diversity is an asset. Yeah. Conflict or difference of opinion is an asset. Confirmation is not. You need to surround yourself with people who will oppose you, who will not be yes man. Our normally is, पहले तो हम लोग दोनों की personality एकदम different. We are absolutely 180-degree two people. What he is weak at, I am strong. Where I am weak, he is strong. We have complementary skills and complementary abilities, which is very good for partnership. Yeah, people don't understand that difference of opinion is actually as an asset. And you must have that dignity, or you must have that kind of courage to accept your mistake when you have realized that, yes, it was a mistake. This quality is there in Surendra Babu. More than me, he has this quality that he'll accept. He'll say, मैं गलत था, आप right. उस टाइम वो बहुत vehemently he was opposing कि नहीं हमको नहीं करना. लेकिन बाद में अगर उनको लगा कि नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि I had prevailed. मेरे को जहां लगा कि मैं एकदम सही हूं, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी. जहां मुझे लगा कि मेरे को डाउट है और ये बोल रहे हैं तो ठीक है, छोड़ो, नहीं करेंगे. पर जहां मेरे को कन्विक्शन था कि नहीं करना चाहिए, वहां कर. ऐसा बैंक का भी है, जहां उनको कन्विक्शन नहीं करना है तो वो उनको करना है, तब हम बोलते नहीं. मतलब एट सर्टेन लेवल तक अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं वो अपोज करूंगा. फिर बाद में मेरे को लगेगा कि अगर वो कन्विक्शन का है तो मेरे को ठीक ही होगा यार, कन्विक्शन, इतना कन्विक्शन है तो ही मस्ट बी राइट. या दैट बी गिवन एट द लास्ट पॉइंट. दूसरी बात, जो पार्टनरशिप लास्ट करने की सबसे बड़ी चीज है, यू शुड हैव एन अटमोस्ट ट्रस्ट इन ईच अदर. बिना ट्रस्ट कुछ नहीं हो सकता. कई बार आपको लगेगा कि गलत हो गया, अच्छा, और फिर आपको थोड़ी ये भी होनी चाहिए कि भाई देखिए, गलतियां तो ह्यूमन से होगी. समटाइम देयर इज एरर ऑफ जजमेंट्स. सो एरर ऑफ जजमेंट से अगर कोई लॉस होता है तो वो फिर
अब यू हैव टू टेक इट इन स्ट्राइड कि भाई इस आदमी से हमको फायदा भी तो हो रहा है ना ऑर्गेनाइज, तो लॉस भी होगा, कोई सुपर ह्यूमन तो कोई है नहीं, तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होना चाहिए। तो सी अगर आप में थोड़ी समता है, मतलब यू कैन forget and forgive the mistakes done by your partner. You can forget and forgive somebody sometime when you feel that your ego is hurt or your sentiments are hurt. You can just, you must keep the larger interest in mind कि हम लोग साथ रह के जो अचीव कर सकते हैं वो अलग रह के कभी नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर हमको थोड़ा अपना ईगो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या उसके लिए अगर हमारा कोई इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या उसके लिए मेरे को कुछ मेरी बातों को हम रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द of the company or the larger interest of the all those involved in the company, वो अगर आपको देने की आपकी मानसिकता है तो आपकी पार्टनरशिप लास्ट करेगी। और देखिए ट्रस्ट होना ही चाहिए, और दोनों तरफ से इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी का 100% डिस्प्ले होना चाहिए। अगर वो नहीं डिस्प्ले होगा तो कोई पार्टनरशिप चलेगी। If any one of the partner is compromising on integrity or honesty, then the partnership will not work. Fortunately, that was not the case in between us. I think trust, integrity, and honesty is the fulcrum. I mean, be it landlord, be it your partners, be it your family, as we can understand, that's a fulcrum, and everything depends on that. Such a wonderful insights, and finding unity in diversity, and to be able to celebrate this diversity, I think is indeed the virtue family should aspire for, and they should learn from PS. And so I would just like to once again inform all our guests, if they have any questions, you can just post it on the chat box, and we'd like to take up as many questions as possible. Arun ji, just one thing we would like to understand from you, कि जैसा आपने बोला कि आप you give a lot of new things, new features, you keep on adding new and new elements in your projects. So ये आप differentiate कैसे करते हैं? Because see, I think there is always going to be oversupply, or there is always going to be a lot of competition in the market. So I think this differentiation strategy we want to understand. How do you go on differentiating your products and you cater to the ever evolving needs of customers? Please throw some light on that. डिफरेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट तो होना ही होगा, बिकॉज नंबर वन काफी चीजें हैं, जैसे आवर ऑल द बिल्डिंग्स इज ग्रीन बिल्डिंग्स। हम लोग सारी बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग का एक अपना कॉस्ट भी है और काफी एडवांटेज है। तो पीपल देखते हैं कि ये ग्रीन बिल्डिंग्स है, इसमें लाइट्स, एयर्स काफी लोग टेक केयर करते हैं, सोलर पैनल का, इलेक्ट्रिसिटी का काफी सेविंग का काम करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन्वायरमेंट, गार्बेज कॉम्पैक्टर, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं जो कि बहुत लोग कॉस्ट अवॉइड करके नहीं देते हैं, और हम लोगों ने बहुत ज्यादा देते हैं हम लोग सभी प्रोजेक्ट में। वाइल्ड कंस्ट्रक्शंस में भी हम लोग पॉल्यूशन का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे पूरे बिल्डिंग्स में स्प्रिंकलर लगा के रखते हैं जहाँ भी पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन नहीं हो, और कवर करके रखते हैं बिल्डिंग को। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में भी देखते हैं, और प्रोजेक्ट में हर एक छोटी छोटी एमिनिटीज, कितनी एमिनिटीज को ऐड कर सकें, नंबर ऑफ एमिनिटी। अभी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जोका में, जिस प्रोजेक्ट का नाम है 102, उसमें 102 फैसिलिटीज है, 102 फैसिलिटीज, जो कि 3,300 रुपीज स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं। तो एक आम आदमी, नॉर्मल पीपल के लिए अगर 102 फैमिली का 102 फैसिलिटी एमिनिटीज का प्रोजेक्ट वहां मिल जाए, तो उसकी तो लाइफ काफी इनहेंस हो गई, काफी लाइफ में चार्म आ जाएगा। तो जितनी मैक्सिमम एमिनिटीज फैसिलिटीज हम लोग देना चाह रहे हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी से, वो हम लोग कर रहे हैं। I think constant innovation is a key, and I think that is evident from what you guys have been doing. So I think now we'll take some questions from the guests, and I think Mr. Hora is joined us today. Mr. G.S. Hora. Sir, would you like to ask something? Yes, I was listening very carefully. The very inspired details about how the PS group has come to such a large extent, and a very leading group of in real estate in Eastern India. And it's a really very inspiring. You have said a very right thing, that it must be, in case of JB, it must be a win-win situation. We should not think for ourselves only. We should think for the other party. That creates the goodwill, and that provides the opportunity of getting the more such JBs, and they become the brand ambassador of the company.
So we are also a real estate, and this sometimes it becomes very difficult to convince the other party how to what benefit they will get by coming into joint venture and what kind of security they have. That's the main point, to convince the other party, the landlord, regarding the security of their money and security of their share in the within the joint venture. So that's the point, how we can handle very safely, and we can convince the other party that they will have their proper share and they will have the proper return from their on their kind of investment in form of land they are putting in. So that's a point oftenly ponder our mind. So I'd like to have your opinion on that. See what happens. There are very many times when the landlord will not express his fear, because he feels that if I suppose he says something कि अगर समझ लीजिए आपने मेरी जमीन में कुछ नहीं किया, आपने मेरी जमीन को प्लेज कर दिया, या उसके दिमाग में 50 देखिए, आप लोग को ये सेंटिमेंट समझना पड़ेगा कि जो आदमी आपको जमीन दे रहा है उसकी वो अपनी जान निकाल के आपको दे रहा है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हिज फैमिली इज हैविंग. इट इज नॉट ओनली मॉनेटरी एसेट, इट इज आल्सो हिज फैमिली हेयरलूम. वो फैमिली की स्थिति है जो आपको दे रहा है, और अगर आपने उसका मिसयूज किया या आपने उसको जो आपने कमिटमेंट किया वो करके, और उसने 10 हॉरर स्टोरी सुन रखी दूसरों से कि बिल्डर तो बड़े बदमाश है, ये है वो है, और वो देते नहीं है फलाना ढिमकान, तो उसके फियर को आप कैसे एड्रेस करेंगे? एक तो ये है कि आप वो आधे फियर तो बताएगा नहीं आप, क्योंकि वो सोचेगा कि ये बोलने से आप ऑफेंड हो जाएंगे या आपके अगेंस्ट में, मतलब वो एक ही विल नॉट एक्सप्रेस दोस फियर्स. मैंने देखा कि दे आर हेजिटेंट इन एक्सप्रेसिंग, और काम आपका हो नहीं रहा है. तो आपको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि उसके पहले पूछने के पहले हम अपनी तरफ से ही बोलते हैं कि भैया ये चीज है ना, ये मैं परफॉर्म करूंगा. जैसे मैं जब शुरू में जाता था जेबी करने के लिए, मैं उनको बोलता था कि आपको मैं ये डिलीवरी टाइम देता हूँ, और अगर ये टाइम से डिलीवरी नहीं हुई तो आपको मैं ये पर डे का इतनी पेनल्टी दूंगा. Oh, that's great. वो मैं पर डे इतनी पेनल्टी दूंगा. तो मैं अपने आप से वॉलंटियर कर रहा हूँ, आप मांग नहीं रहे, आप बिना मांगे मैं दे रहा हूँ आपको. तो उसको लगता है यार ये तो बिल्डर बड़ा जेन्युइन है यार, ये मेरे को किसी ने बोला ही नहीं कि वो पेनल्टी देगा, ये तो पेनल्टी देने के लिए तैयार है. तो मैं उनको छोटी मोटी पेनल्टी, मेरे को लगता था कि भाई यार इसकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है यार, तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में रीजनेबल पेनल्टी दूं ना. ऐसे 100 करोड़ में मैं 10,000 रुपया रोज तो नहीं दे सकता ना. 10,000 रुपया कई लोग लिख देते हैं 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया क्या वैल्यू है? मैं उनको लिखता था 1 लाख रुपया रोज का पेनल्टी दूंगा. तो उनको लगता था यार ये तो पेनल्टी ठीक है. तो एक उनका अच्छा, उन्होंने वॉइस नहीं किया, हो सकता है उनके दिमाग में, लेकिन वॉइस नहीं कर रहे. तो मैं अपने तरफ से बोलता था आपको ये पेनल्टी. दूसरा मैंने लिख देता था हर एग्रीमेंट में कि द बिल्डर is only acting as a contractor on behalf of the owner under this agreement, and in no way the builder will exercise any possessory rights on the said property, which means that your status as long as you are doing the construction is that of a contractor, and if the landlord is not satisfied with your services and with your work, he can remove you from that place just like he can remove a contractor. You do not have any possessory right over the property. वो मैं volunteer करके लिख देता. वो आप लिखे ना लिखे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि वो आपका राइट उतना ही है, लेकिन आप लिख के उसको रीअश्योर कर देते हैं कि भाई उसके जो डर था वो निकल गया उसका. इस तरह की कई चीजें हम लोग अपने तरफ से वॉलंटियर करके उनको लिख देते थे कि ये हम सारी चीजें दे रहे हैं. आपको पता है, मैं थर्ड वेंचर में गया, वो लैंडलॉर्ड, वो हमारा प्रोजेक्ट था जजेस कोर्ट रोड. तो मेरे को ब्रोकर लेके गया, बोला कि आप मिल लीजिए. वो प्रोजेक्ट तो एक्चुअली मिस्टर बेलानी के साथ, जुगल खेतावत के साथ करेंगे, लेकिन आप मिल लीजिए, हो सकता है दिमाग चेंज हो जाए. तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि आप क्यों आए, पता नहीं क्यों लेके आए आपको. तो इसको तो मैंने बोल दिया था कि मैं तो कल जुगल बाबू के साथ में, जुगल बाबू हमारे अब तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत इज अ वेरी रेस्पेक्टेड बिल्डर ऑफ द कलकत्ता. तो आप क्यों लेके आए? मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही मिलने आया हूँ आपसे, आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ बिकॉज मैं बिल्डर हूँ.
तो आप अगर एग्रीमेंट दिखाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके इंटरेस्ट की क्या चीज़ें वो आपको होनी चाहिए। बोला अच्छा आप बताएंगे मेरे को, मैंने कहा बता दूंगा, दिखाइए मेरे को एग्रीमेंट। तो उन्होंने एग्रीमेंट दिखाया मेरे को, उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं थे कंस्ट्रक्शन की। मेरे आपके तो यहाँ स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपके तो ओपन है। अब आप ये इस तरह का ओपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्डर क्या देगा नहीं देगा, आप उसमें तो फिर परसेंटेज का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप लिखवाइए कि साहब हम मार्बल देंगे, इटालियन मार्बल देंगे, फलाना देंगे, लिफ्ट किसकी लगाएंगे, ये क्या करेंगे। उसमें लिखा होता खाली फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन। अभी फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो जी बड़ा उसको यार बोला यार ये तो मेरे को एकदम मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। वो गया दूसरे दिन जुगल बाबू के पास, बोला जी इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं, स्पेसिफिकेशन आप दीजिए मेरे को। जुगल बाबू बोले कि हम कोई स्पेसिफिकेशन किसी को नहीं देते हैं, फर्स्ट क्लास लिख दिया ना, बस बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग हमने आज तक किसी को नहीं दिया स्पेसिफिकेशन, कहाँ से देंगे। वो चिढ़ गया वहां से, वो आया मेरे पास, मेरे को फोन करके बुलाया, बोला मैं किसी को भी दे दूं, जुगल बाबू को तो दूंगा ही नहीं। मेरे तो इंसल्ट करता उन्होंने, वो क्या समझते हैं, वो इतने बड़े बिल्डर है तो क्या हुआ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। आप जी आप मेरे को स्पेसिफिकेशन दीजिए, आप क्या देंगे। मैं तो रेडी था स्पेसिफिकेशन, मैंने कहा ये देंगे, ले लीजिए। वो डील हो गई हमारे साथ, और वो डील ही नहीं हुई, शिवाजी मुखर्जी ने हमको 4 डील और दिलाई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, you have to genuinely feel the sentiments of the landlord as if he's your brother, as if he's your very close friend. उसके बाद उसको आपको रीअश्योर करना पड़ेगा, रीअश्योर करना पड़ेगा by volunteering certain restriction on yourself। कि साहब देखिए मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि आपकी फियर को रिमूव करने के लिए मैं खुद ये रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज अपने अगेंस्ट में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लिख दीजिए आप। वेरी नाइस। तब लगता है कि उसको ये फील होता है कि ये आदमी जेन्युइन है, इस आदमी से मुझे कोई परेशानी नहीं। ज्वाइंट वेंचर में अभी रिसेंटली आफ्टर द जीएसटी बहुत बड़ा इशू आ रहा है, लैंडलॉर्ड के शेयर पे जीएसटी लग जाता है, जो तो और वो ऐसे टाइम पे जीएसटी है कि वो रियलाइज नहीं कर पाते, इनपुट उनको मिलता नहीं है फिर, क्योंकि ऑन कंप्लीशन लगता है वो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जेबी में। सेकेंडली एक जो सेकेंड इशू बहुत प्रॉब्लम होती है कि इन केस ऑफ जेबी लैंड तो मॉर्गेज होता नहीं, कर नहीं सकते, लैंडलॉर्ड तो एग्री नहीं करता है, तो बैंक फाइनेंस नहीं मिलता है। These are two big issues in joint ventures. हम लोग ने we have been able to mortgage। हम लोग एक शॉपिंग मॉल बना रहे थे जीबी में, चेन्नई में। अब शॉपिंग मॉल तो बिना बैंक से लोन लिए आप बना नहीं सकते, कैसे बनाएंगे आप, कोई थोड़ी बेच रहे हैं फ्लैट की तरह। हाँ वो तो बाहर में देना है फिर गारंटर को। और वो जो नेवी में था, जॉइंट वेंचर में था, तो हमने क्या किया, हमने बैंक को बोला और उनको भी बोला, मैंने कहा आई विल प्लेज ओनली दी, अच्छा उसमें the division of 50-50 is also not by meets and bounds, it is undivided 50% share only। ठीक है, उसको तो और भी झमेला है कि अनडिवाइडेड पोर्शन है। हमने कहा साहब हमारा जो अनडिवाइडेड पोर्शन है, जो हम इस मॉल में ओन करेंगे, उसको हम प्लेज कर देंगे। उसके लिए लैंडलॉर्ड से कंफर्मेशन चाहिए। लैंडलॉर्ड ने कंफर्म कर दिया कि साहब अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट शेयर of land attributable to 50% share of the builder, and together with the land they are allowed to pledge। and उसमें हमने खुद volunteer देके एक condition लगाई कि but the amount withdrawn from the bank will not exceed the amount invested in the mall, so he is always protected। मैं मॉल में अगर 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा तो मैं 1 करोड़ रुपया से ज्यादा उठा नहीं सकता बैंक से, चाहे बैंक सैंक्शन 100 करोड़ कर दे, तो उसकी रिस्क नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बिल्डर ने 1 करोड़ रुपया लगा, 50 करोड़ रुपया वहां उठा से भाग गया। तो वो रिस्ट्रिक्शन हमने खुद ने लगाया कि साहब आपके जितना पैसा हम बैंक आपके प्रोजेक्ट पे लगाएंगे उससे कम रुपया हम उठाएंगे। तो ही वाज वेरी रीअश्योर्ड, the bank was reassured, and we got the money from the bank। Otherwise how will we make a shopping mall unless there is a bank loan? तो बैंक देखिए, you have to structure in such a fashion with the bank and with the landlord that both feel secured। सिक्योर कैसे फील करेंगे वो तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब सेकंड डील कर रहा था तो मुझे वहां जो टेनेंट था वो बोला जी मैं तो, आप मेरे को पहले 27 लाख रुपया दे दीजिए,
उसके बाद मैं खाली करना चालू करूंगा, उसके बाद मैं अपना सामान रिमूव करूंगा। मैंने कहा अरे 27 लाख तुमको दे दे, कल तुम रिमूव नहीं करोगे तब क्या होगा? बोल नहीं जी मैं तो नहीं कर रहा। मेरे को तो बोला कि कौन है प्रदीप चोपड़ा, 27 लाख, यू विल नॉट सी दिस दैट एंड ऑल। आई सेड वेयर इज योर बैंक? मेरे को बोला हांगकांग बैंक में बैंक अकाउंट है। मैंने कहा अच्छा चलो मेरे को इंट्रोड्यूस करके तुमने हांगकांग बैंक में बैंक अकाउंट एक और खोल दिया, और मैंने 27 लाख वहाँ ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा देख जाके बैंक में है ना 27 लाख, ये तो है नहीं कि हमारे पास है नहीं, तेरी बैंक में मैंने अपने अकाउंट में 27 लाख ट्रांसफर कर दिए, तो है ना मेरे पास 27 लाख, अब खाली तो कर। उसने खाली कर दिया। अपने कहा पेपर लेके चाबी लेके बैंक मैनेजर के पास चलते हैं, उसके रूम में, तू चाबी और कागज में साइन करके बैंक मैनेजर को दे दे, और मैं 27 लाख का ट्रांसफर चेक तेरे को बैंक मैनेजर को दे देता हूँ। तो बोला नहीं, वो चाबी और कागज आपको जब मिलेंगे जब मेरे को बैंक ट्रांसफर करके मेरे को सर्टिफिकेट दे देगा कि 27 लाख मेरे बैंक में क्रेडिट हो गया। मैंने कहा चल ठीक है, मान लिया। उसने दे दिया और वो मेरे को कागज और चाबी दे दी। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो वी हैव टू थिंक दैट ये आदमी के दिमाग में शक है, ये आदमी के दिमाग में इनसिक्योरिटी है, ये डर रहा है, इसको कैसे मैं रिश्योर करूं? ये सोल्यूशन हमको देना पड़ेगा एज ए बिल्डर, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि इसको रीअश्योर कैसे करूं और मेरा काम भी हो जाए, क्योंकि वो जानते नहीं है, ना बैंकर जानता है। Thank you. These are the practical ways of handling from your experience. We also have another question, sir, and this is from Mr. Ranjit Malik, and he asks, please enlighten us how technology has evolved in these years and what lies ahead in future that will define the housing sector. See, first of all, most of the work which is happening in real estate will happen with the aid of technology, right from the conception to designing, 3D imaging, and now the virtual reality, extended reality, all these things are coming. So maybe you don't have to, in future, you don't have to make a model flat. आप पूरा का पूरा मॉडल बिल्डिंग बना दीजिए, वो आदमी ऐसे उसको ऐसे लगेगा वो बिल्डिंग में चला गया है। दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। आपको अभी हम लोग जो मॉडल फ्लैट बनाते हैं और वो सब बनाते हैं, सबको जरूरत ही नहीं, उसको बिना मॉडल फ्लैट की 3D मॉडल फ्लैट बन जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशंस में जैसे मैंने अभी बताया आपको, ब्लॉकचेन है which is very very efficient way of managing. Already देखिए we are already all using ERP, तो हम लोग very very robust ERP we are using, so every operation of real estate is integrated through ERP. All your marketing, all your these operations now are done online, and the moment you really on real time basis you are getting updated. That means suppose somebody has sold your flat or blocked your flat, whether online or whether offline, or whether the real time your inventory will be shown. So otherwise क्या होता था पहले, किसी ने बेच दिया आपको पता ही नहीं, आपने भी वो बेच दिया, 3 आदमी ने वही एक ही फ्लैट बेच दिया, फिर आपको पता है उसको पता ही नहीं था। ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे सारी। People will be able to see from wherever they are the progress of the work. What is the status of my flat today? They can see on real time. All these things will happen. We have to constantly think how we can use technology to increase our efficiency, to increase our visibility, to make the customer friendly, and customer can whatever they want to do. पहले क्या होता था कि कोई ने कस्टमर को कुछ चीज चेंज करनी है तो वो किसी को बोला, फिर वो ट्रांसफर ही नहीं हुई, वो तो सेल्समैन को ने कमिट कर दिया, अब वो जो एग्जीक्यूशन टीम है उसको पता ही नहीं है। All these things will get eliminated because when you have a blockchain, anybody writing anything will be reflected. Everybody is on the same dashboard, so there's no chances of anything getting eliminated. If you are doing something which is other than what is stored, the system will alert you, okay, this what you are doing is not right. So all these things will happen, and technology adoption will be your differentiator.
So the faster you adopt technology, the better competitive edge you will have vis-a-vis somebody who will not adopt the technology. And you have to encourage all your people to constantly upgrade their, at least to start with, to their thought process, that they should be forward looking, they should be very willing to adopt technology, they should not resist adopting technology, and they should constantly expose themselves of what are the technology which are coming. See, हमारे यहाँ तो हम लोग अभी modern tools ही use नहीं करते, sites में tools are available which are increasing tremendously the productivity of the workforce. So all those things has to come, which will come, I think, sooner than later. So these are going to happen. These are very unique ideas and a lot of food for thought for all fellow developers out here. I think Rajiv Baidji has joined us. He has a question. Rajiv Baidji, please. थैंक यू उमंग. आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है. मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा प्रदीप जी और अरुण जी के साथ में है. ये मास्टर ऑफ रियल एस्टेट प्रदीप जी, जो कि हमेशा 20 साल आगे का सोचते हैं. बेसिकली हम लोग नॉर्थ बंगाल में रहते हैं. नॉर्थ बंगाल का जो एरिया है वो पूरा टी टूरिज्म पर है. तो टी टूरिज्म में किस तरह की जेबी की जाए ताकि ये आने वाले समय में जो पूरा वर्ल्ड यहाँ आके रहे. प्रदीप जी का पर्सनल इंटरेस्ट भी हमेशा टी में रहा है. मैं इनके साथ कई बार मिला भी हूँ. बट सिलीगुड़ी के अंदर में कोई भी ऐसा बिल्डर नहीं है जो इसको लेके बहुत ज़्यादा बड़ा फ्यूचर सोचता है. क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब हर आदमी दो तरह का घर चाहता है. एक घर रहने के लिए और एक घर आउटस्कर्ट में अपनी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए. तो सिलीगुड़ी में क्या किस तरह की जेबी की जाए टी गार्डन के अंदर में, ताकि दोनों की तरफ विन विन सिचुएशन रहे, टी गार्डन भी चलता रहे और ये भी चलता रहे. ये क्वेश्चन है प्रदीप जी और अरुण जी दोनों से ही है. अनुभव. प्रदीप जी आप बताइए जेवी के प्लीज. देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं. मैं अभी आप आने के पहले ही मैं बात कर रहा था कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम will liberate a lot of people from staying at home. They will start working from anywhere, and particularly from places which are very picturesque, very healthy, very soul comforting and all that. तो आपके जो टी गार्डन्स हैं, they are actually fitting the bill कि वहाँ पर इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है, इतनी बढ़िया स्काईलाइन है, वहाँ से हर आदमी काम करने की चेष्टा करे. और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. We may or may not realize it, but this is actually going to be the biggest opportunity which has suddenly come to real estate industry. Developing areas which earlier were thought as holiday destination will be now thought as permanent working destination for people who would like to work from there. So this is a big opportunity. अब आपका जो कैसे बनाए, मैं आपको राजीव जी बोलूँगा कि आप you should go and see डिल्मा के गार्डन्स के अंदर में उन्होंने अपने जो पुराने जो हेरिटेज बंगलोज को रेस्टोर करके and what kind of facilities they have created. अब मैं रह के आया था बस 7 दिन. अमेजिंग. माने आप सोचिए कि वर्ल्ड का कोई होटल उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकता. इतना सुंदर तो लोकेशन है, इतनी बढ़िया सर्विस है और इतना बढ़िया वहाँ एम्बियंस और चीज़. मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ. कोई सोच सकता है कि कलकत्ते जैसी जगह से जहाँ पर नदी इतनी गंदी है, मतलब आप सोचिए वहाँ पर आपको कई बार तो लाशें तैरती मिलती है और माने सारे जो बर्निंग घाट हैं वो हमारी नदियों के ऊपर बने हुए हैं. और आप सोचते हैं कि नदियों में हम लोग जब जाते हैं तो सोचिए कि वहाँ पे लोग सवेरे टॉयलेट भी जा रहे हैं, कोई वहाँ पे नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कर रहा है. और कलकत्ते से जो बनारस जाने का जो नदी है उसमें ड्राफ्ट बहुत कम है. तो आप जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती है आप देखेंगे पानी का स्तर नीचे जाता रहे तो कई बार तो ऐसा होता है कि 3 फीट का ही ड्राफ्ट है, कोई जहाज जा ही नहीं सकता. उस तरह के चैलेंजेस. और इंडिया में काम करना कितना डिफिकल्ट है और खासकर कलकत्ते में काम करना कितना डिफिकल्ट है. उसके बाद एक सज्जन राज सिंह जी ने 12 साल पहले यहाँ पर एक जहाज, सुपर लग्जरी डीलक्स जहाज लेके उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट, हिंदुस्तानी टूरिस्ट एक भी नहीं, उनको यहाँ से बनारस ले जाने लगे और $10,000 चार्ज करते थे 13 दिन के लिए. उन्होंने एक जहाज से 5 जहाज कर लिए अगले लास्ट 12 साल. और पेंडेमिक के पहले
उनके 2-2 साल की आगे से आगे बुकिंग रहती थी। तो ये बोलना कि साहब यहाँ पर हिंदुस्तानी तो इतना पैसा देंगे नहीं और फॉरेन टूरिस्ट आएंगे नहीं और ये सब जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनको एक पॉजिटिव आदमी एग्जीक्यूट करके दिखा देता है कि साहब क्या पॉसिबिलिटी है। उनके पहले यहाँ पर रिवर क्रूज में कम से कम 10 आदमी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ट्राई टू डू, एवरीबडी क्लोज डाउन, नोबडी कुड मेक मनी एंड ही हैज मिंटेड मनी। आप कभी आएंगे ना कलकत्ते में, आपको ले जाके दिखाऊंगा, बिकॉज वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। क्या जहाज है, इतना ऐसा जहाज आपको यूरोप में नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया जहाज उन्होंने, इतना कंफर्टेबल, इतना अट्रैक्टिव जहाज बनाया। मैंने एक टॉक दी थी। समय है क्या अपने पास? हाँ सर, हाँ सर। मैं जब जर्मनी गया यहाँ से 1991 में, तो मुझे मालूम नहीं था क्या बिजनेस करना है। तो मैंने ऐसी कोई इंडिया टुडे पढ़ रहा था, मैंने उसमें देखा कि यहाँ से टूम स्टोन जाते हैं और जेम और एंटरप्राइजेस, दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वो यहाँ से अमेरिका टूम स्टोन भेजते हैं, यूरोप भेजते हैं, यूरोप में मतलब यूके में भेजते हैं और जापान में भेजते हैं, लेकिन जर्मनी नहीं भेजते। तो मैं वो ट्रेड फेयर में गया, मेरे को एक आदमी मिला, मैंने कहा यार ये क्या इतना बड़ा बड़ा तो स्टॉल करके रखे और ये जर्मनी माल क्यों नहीं बेचते, और जर्मनी में हर साल आके ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते। बोले आप जर्मनी भूल जाइए, इनकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिंजेंट है, कोई हिंदुस्तानी बना ही नहीं सकता, तो आप भूल ही जाइए और आप भी मत करिएगा। बोले जेम और एंटरप्राइजिंग नहीं करे, हूँ प्रदीप चोपड़ा, और आप तो जानते ही नहीं है रियल एस्टेट के बारे में, ग्रेनाइट के बारे में, और आप ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई क्वेरी है, क्या है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार ये जर्मन वाले क्या कोई मार्स से आए क्या? तो बोला नहीं, वो हंसने लगा। मैंने क्या किया, वहां पर ब्रेमेन में एक ऑर्डर लिया और पहला ऑर्डर मैंने डिलीवरी कर दिया। पहले ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे को चेक भी मिल गया, दूसरा ऑर्डर मिल गया। मैंने कहा ये फालतू झूठ मूठ में डरा रहा था यार। फिर मैंने और कंटेनर मंगाए तो सब जगह डिफेक्ट आने चालू हो गए। एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने देखा कि लॉस हो गया। मैंने कहा बात तो कृष्ण कुमार सही बोल रहा था, तो ऐसे चलेगा नहीं। तो मेरी जो पहली कस्टमर थी, उसकी बेटी उस टाइम में 5 साल का स्टोन मेसन का कोर्स करके आई। वहाँ जर्मनी पे हर चीज में कोर्स करना है, वो बिना दे हैव एवरीथिंग इन प्रोफेशनल। उसने कहा देखिए आपकी ये डिफेक्ट है, ये सही नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग में ये नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, फलाना नहीं। तो मैंने एक मैनुअल बना के तुम्हारा खाने के लिए रखा है, ले लो। कि आप इसको तमिल में कन्वर्ट करके सारे वर्कर और सुपरवाइजर से शेयर करिए और ये सब चीजें आप ठीक करिए। वो 3 महीने गुजर के कुछ नहीं हुआ, वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे तो होगा नहीं, तुम यार मेरे को तेरे इंस्टीट्यूट ले चल और तेरे प्रिंसिपल से बात करा। प्रिंसिपल को मैंने कहा कि आपके जो 2 बेस्ट अभी जो बच्चे जो निकले हैं ग्रेजुएट होके, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको बोलिए मैं जर्मनी में इंडिया में 6 महीने का काम दूंगा, जर्मन सैलरी दूंगा। तो उन्होंने बोला कि ये 2 बच्चे हैं जो चाहिए नौकरी। मैंने कहा तुमको जाके हमारी फैक्ट्री में जर्मन सिस्टम ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है, एंड एवरी लेवल पे जैसे तुम लोग क्यूसी चेक करते हो, क्वेरी से रफ ब्लॉक आने से लेके पैकेजिंग तक शुड बी परफेक्टली डन। देयर शुड नॉट बी एनी क्लेम व्हाटसोएवर। और अगर नेक्स्ट 6 महीने में 40 कंटेनर जाएंगे, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो तुमको मैं 1 महीने का बोनस दूंगा। 1 महीना तुम हिंदुस्तान घूमोगे, सारा होटल का खर्चा, घूमने का खर्चा, खाने पीने का सब खर्चा मेरा। बोले ठीक है जी। वो 6 महीने में ऐसा रोबो सिस्टम वहां पर बना दिए, 40 कंटेनर गए, एक डिफेक्ट नहीं आया। पूरा गांव जो कृष्णगिरी गांव है, उसमें सबसे बड़ा फैक्ट्री इनकी थी, और सारा गांव आके वहां पर जब वो सिखाता था और करता था, सब 1 से 2 3 सब आके सीख के चले गए। और क्या वहाँ एक रिलेटिव है, इसका रिलेटिव उसकी फैक्ट्री में काम करता है, इसका ये करता है, ऐसे ऐसे गांव पूरा ही वही काम में था। आपको मैं क्या बताऊं, उसके बाद 2 साल के अंदर में 237 जर्मन फैक्ट्रियां जो टूम्बस्टोन बनाती थी, सारी की सारी बंद हो गई। 99% German tombstone market was captured by Indians, because the day we meet the quality, they have no way to meet our prices. हमको सिर्फ क्वालिटी बनानी है, प्राइसेस में तो उनसे सक ही नहीं सकते। आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की चीज बनाइए, हिल्स में जहां बनाना चाहते हैं, कस्टमर आपके पीछे पीछे घूमेंगे।
और आप कर सकते हैं, आपका तो ये पैशन ही है। थैंक यू सर। आप कर देंगे। और मैं आपके लिए अभी मैं ब्लॉकचेन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आज सवेरे यूनिवर्सिटी में डिस्कस किया था, तो आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आपका फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन सिस्टम से सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम आपसे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली चोपड़ा जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि टी टूरिज्म को लेके अभी तक कोई बड़ी कंपनी नॉर्थ बंगाल में एंट्री नहीं की है। बागान है, गार्डन है, फ्री में नेचर है, सब कुछ है। इनको हम लोग इन केस भी करवा सकते हैं, बट जब तक कोई बड़ी कंपनी है, जब तक कोई बड़ी सोच वाले लोग यहाँ नहीं आएंगे, तब तक ये टर्न नहीं होगा। आपने सही बोला कि आपने जर्मनी में पहला स्टेप उठाया, तब 230 कंपनी वहाँ की बंद हुई। तो मैं भी एक बड़े रूप में इसको बंगाल को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि टी टूरिज्म ऐसा हो कि वर्ल्ड के लोग यहाँ आगे, सेकेंड कश्मीर में जिस तरह बोलता हूँ इंडिया में एक कश्मीर जगह है, उस तरह इंडिया में अपने आप में ये जगह बने। उसके लिए क्या है कि बड़ी कंपनियां जरूरी है। मैं चाहता हूँ पीएस ग्रुप भी, जो कि कलकत्ता तक है अभी, एक बार के लिए, जो कि आपका पैशन है टी गार्डन को लेके और बहुत ज्यादा आपको लव है टी से, मुझे खुद को मालूम है, तो आप इस तरफ भी देखें ताकि एक पीएस ग्रुप का टेक लगेगा ना एक गार्डन के पीछे, किसी भी गार्डन के पीछे, नॉट XYZ। आप देखोगे कि सिलीगुड़ी की जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी इंडिया की कंपनियां, सब मूव ऑन होगी और अपने आप में एक ये टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनेगा, ताकि लोग, जो यहाँ के लोग हैं, जो किसान है, जो भी है, उनको एक अच्छा पैसा भी मिलेगा और एक अपर लेवल की जिंदगी जी सकते हैं। तो कुछ मैं यही बस बोलना चाहता हूँ। ऐसा है, मैं अपनी टीम को लेके जैसे ही पेंडेमिक खत्म होता है ना, मैं आपका गेस्ट बन के आता हूँ। हाँ जी, गेस्ट नहीं, आप घर के हो, घर की तरह आओ। थैंक यू वेरी मच, आपने एक क्वेश्चन लिया। थैंक यू उमंग। Thank you, Bhaiya. That was a wonderful idea. And I think a lot of questions are there, but somehow due to constraint of time, we'd just like to wrap up with one final question. I think Dilip Bhai has a question. थैंक यू उमंग। बहुत साल पहले की बात है, मैं प्रदीप जी, आपने बहुत सारी बात बताई पैशन की, इसकी। मैं आपकी एक छोटी सी किताब मुझे मामा जी ने दी, संपत मामा जी ने दी थी, सलाम इंडिया, और आज भी वो मेरे टेबल पे रखी हुई है, बहुत लोगों को मैंने दी। तो वो जर्नी जहाँ से शुरू हुई, अब हमको आपको शहर वाली का जो फूड का लेगेसी खत्म हो गया, मैं लगातार देख रहा हूँ कि शहर वाली यू हैव रिवाइव्ड दैट। सो अब अभी हमारे साथ में बहुत सारे यूथ इंटरप्रेन्योर्स हैं, रियल एस्टेट के बहुत सारे स्टलवर्ट्स हैं। जो सबसे बड़ा चीज नॉर्थ बंगाल लैक करता है वो है विजन। हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं विजन से, ये कर रहे हैं। नए इंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए प्रदीप जी? देखिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले जो है वो जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना आसपास में, उनको अवॉइड करके रहना चाहिए। क्योंकि आप जब तक नेगेटिव लोगों से मुक्त नहीं होंगे, जब तक आपकी सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट आपकी नेगेटिव सोच है और कुछ नहीं। तो नेगेटिव सोच से दूर रहिए। मेरे को 50 आदमी ने बोला कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो ये रुपये। मेरे खुद के ससुर जी बोले कि क्या टाइम खराब करो, थाने नौकरी दिला दूं मैं, सब क्या फालतू का काम है, रियल एस्टेट काम होता है। तो नेगेटिव सोच से दूर रहना सबसे पहली जरूरत है। और दूसरी जो देखिए ऐसा है कि आई was very inspired by reading other people's success stories. तो आप बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ो, उसमें कुछ ना कुछ इंसाइट मिलती रहती है, and you will always stay. That is also very very essential. और तीसरा क्या है कि वो बेसिक चीज है। जब मैं किताब लिख रहा हूँ, एक्चुअली आई एम राइटिंग अ बुक बेस्ड ऑन माय takeaways from different experiences I had, and in the terms of prioritizing them, what is the first when you are starting a business, what is the first। जैसे मैं एक सिंपल बात ही बताता हूँ। मैं बहुत साल रियल एस्टेट में आने के बहुत साल बाद तक, कम से कम 20 साल बाद तक भाड़े के मकान में रहता, और इतना छोटा मकान था, टूटा फूटा मकान था। मेरा लड़का लंबा हो गया, बड़ा हो गया, उसके रहने के लिए कमरा नहीं था, वो ड्राइंग रूम में सोता था। उसके पैर इतने लंबे हो गए थे कि सोफे में अटता नहीं था, वो सोफे में सोना पड़ता था उसको। लेकिन मैंने फ्लैट नहीं खरीदा, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई ऑलरेडी कंपनी में पैसे की हम लोग इतना बोरो करके रखे, इतना पैसा है तो हम लोग। लेकिन हमने पहले दिन ही ऑफिस में खर्चा कर दिया। ऑफिस में उस टाइम में 6.5 लाख रुपए तो ऑफिस खरीदी, और 6.5 लाख रुपए पर 13, 14, 15 लाख रुपए हमने ऑफिस में खर्च किया। तो ऑफिस से घर आता है, घर से ऑफिस नहीं आती। ये बात समझ में आनी चाहिए। आपकी ऑफिस आपकी प्रायोरिटी है, आपका घर नहीं है प्रायोरिटी।
तो घर में खर्च तब करिए जब सरप्लस पैसा हो, और ऑफिस में खर्चा जब बोरो करके भी करना हो तो करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये मैंने उसमें कवर की है कि आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो ये एक तो प्रायोरिटी निश्चित होनी चाहिए हमारी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। आज जैसे मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं भी हो तो गाड़ी खरीदिए और ड्राइवर भी रखिए, क्योंकि आप ड्राइवर अगर रहेगा तो आपका जो टाइम है, जो ट्रैवल करने के टाइम, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फोन से, ताकि आप कस्टमर के साथ टच में रहें, आप कॉन्स्टेंटली नई अपॉर्चुनिटी खोज सके और करें। तो ड्राइवर में पैसा बचाने से कोई फायदा नहीं है, ड्राइवर तो रखना ही चाहिए और गाड़ी भी रखनी चाहिए। हमने गाड़ी खरीदी जब हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तब गाड़ी खरीदी थी, और गाड़ी खरीदी इसके कारण ही हमको फर्स्ट सेकंड प्रोजेक्ट, नहीं तो हम स्कूटर में बैठ के वहां जाते तो हमको प्रोजेक्ट ही नहीं मिलता। तो देयर आर सर्टेन प्रायोरिटी एरिया वेयर वी शुड फोकस एज ए न्यू कमर एंड ए स्टार्टअप। तो ये चीजें हमको जाननी जरूरी है, कई बार हमको पता नहीं रहती, कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो बताते, तो छोटी छोटी बातें हमको पता नहीं चलती। तो ये एक तो क्या कि कॉन्स्टेंटली दे शुड रीड the other people's success stories and their advices and their takeaways so that you know exactly what to do when the situation comes. ये चीजें थोड़ी पढ़ने की हैबिट, देखिए मेरे को तो सबसे ज्यादा जो चीज से बेनिफिट हुआ वो हुआ मेरी हैबिट ऑफ रीडिंग से। आई हैड ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रीडिंग, एंड मैं जब बिजनेस कर रहा था उस टाइम में मैंने बहुत लोगों की जीवनियाँ, जो बिजनेसमैन थी उनकी जीवनियाँ पढ़ी, उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में पढ़ा। तो ये बहुत हेल्प किया। पढ़ने की हैबिट तो मेरे ख्याल में रखनी चाहिए, उससे बहुत लाभ होगा। Well, I think not everyone who has knowledge and experience is able to articulate so well and make things so crystal clear for all of us. And I'm personally fortunate to be a student of Pradip sir. So I think now I'd like to call upon Budishwata Mukherjee ji, Additional Director of ICC, to please conclude, and then we move to the vote of thanks. No, I think, thank you, Mr. Mittal. I think we've had a wonderful session. I think really a case study in itself. I think the way Mr. Chopra started, and today the kind of dizzy heights that he has reached, and frankly speaking, when you travel across Kolkata, I think one of the most prominent names that come across is the PS Group. So I think it has been a success story all the way. And I'm sure that in coming days, PS Group will also spearhead the business and the industry in North Bengal and in other parts of the country. So I think we've had a very, very good session, very informative. And I think what has really come out is, the kind of trust that he has been able to build in the minds of his customers in terms of giving delivery on time, giving the right quality of materials. I think the kind of knowledge that he has acquired, and he has actually put that into business use, the knowledge that he has acquired over time has only helped the business to grow from strength to strength. And last, what he mentioned, the habit of reading and reading success stories. And a lot of people among us who read a lot of, the life histories of various people, but to really pick out the main areas which one needs to imbibe as he, takes that step towards success is very, very important. So I think reading success stories, but also equally important is to imbibe those good points, what you have read, into your own practical life is what makes you successful, what sets you apart from the rest of the people. So I think, thank you, Mr. Chopra, and thank you, Mr. Arun Sancheti. I think the ICC North Bengal members have really, really benefited from the discourse, from the discussions. And I think with the support of my ICC North Bengal team, we would love to have you on other occasions where we could meet you physically, and we would be happy if you could share your valuable thoughts and insights with larger group once this
pandemic situation is over. So on behalf of the Indian Chamber of Commerce, I think we would like to thank you wholeheartedly for spending so much of time with all of us. Thank you, Mr. Chopra. Thank you, sir. Thank you Thank you, all sir. for giving this opportunity. Thanks so very much. I also enjoyed this session and interaction, and it was a great pleasure to be here. I'm taking a very sweet and very good memories of this session. So thank you for giving me this opportunity. I think one book we are waiting to read is Pradip sir's autobiography, and we hope to read it soon. And so, and also we would love to host you people sometime once this pandemic is over. We'll like to call you to Siliguri and maybe do one-on-one interaction so that most of us get to meet you and understand more. And so now I'd like to hand over to Manish. More importantly, Mr. Mittal, I think we must look up to Mr. Chopra to change the skyline of Siliguri the way he has done for Calcutta. Yes, I think today That's what I wanted to ask is, sir, when PS is coming to Siliguri, sir? One question to you, sir. Let's see, God willing, very soon. No, Mr. Chopra, I'll add to Sanjay's question. Arun, Yes. I have seen Arun Bhaiya to grow from Farmers via Siliguri to Calcutta. So we can push on him that he should bring Mr. Chopra and Mr. Dugar to Siliguri. Umang. I think today is a red carpet day for PS Group. Absolutely, of course. Yeah, and so now I'd like to hand over to Manish Bhaiya for the vote of thanks. Yeah, good evening, everyone. First of all, I would like to thanks all the ICC members for joining for this webinar. I would like to say, Pradip sir, that I am one of the buyer with PS Group in one of the property in Calcutta. So I'm very much satisfied me being a buyer with PS Group. And I would like to thank Mr. Arun Sancheti for giving the ideas regarding the amenities. It's a good takeaway for us. And I would also like to thank Umang for moderating the program. And I would also like to thank Mr. Mukherjee for joining this program. And thank you very much, ICC members, for joining this program. And hope we can see PS Group coming to Siliguri and we can have a one-on-one session with all our members and all the business community out here. So thank you very much for the session. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for being here.